Very good evening to all of you. Is this audible? Visible to all? Am I audible? Visible everyone? How are you all? केमती अछंती समस्ते? How are you? Good evening Sasmita. How are you all? केमती अछंती समस्ते? कुहतु. प्रणाम विक्रम. बट भलो अच्छा समस्ते खुशी लगुच शुणी कि एवरीवन इज फाइन. बहुत बढ़िया. ऑलराइट. सो इकोनॉमिक्स रो अनेक गुडे इंपोर्टेंट पॉइंट बाय द एंड ऑफ लास्ट क्लास मु डिस्कशन करि सारथिली. ओसीएस प्रीलिम्स ପାଇଁ प्रिपेयर होतन समस्त राइट. ये क्लास प्रीलिम्स ପାଇଁ हां कि नहीं. ये क्लास आमे कोन ପାଇଁ करथले ओसीएस प्रीलिम्स ପାଇଁ करथले. प्रीलिमिनरी अक्टोबर लास्ट रे हेबो. देखो प्रीलिम्स एग्जाम अक्टोबर रे हेबो. ठीक अछि. राति हेलानी ठीक अछि. हो राति कोन असुविधा. अक्टोबर रे ही हो प्रीलिम्स. ओसीएस प्रीलिम्स एग्जाम अक्टोबर रे ही हेबो. ठीक अछि. ओके. नाउ क्लियर. नाउ साउंड क्लियर. समस्त को सुनि पारछंती. सुनि पारछंती समस्ते. बेटर. ऑलराइट. बढ़िया. चलो. So by the end of last class we have discussed some of the important concepts of economics. Right? Most of the important concept mu discuss kari sarithili. Introduction to economics, growth, development, happiness, planning, financial system, RBI, Reserve Bank of India, World Trade Organization, International Organization. ये सब aspect आमे last class सुधा discussion करि सारथिले. Now this is the time. What for? This is the time to revisit or recall what we have discussed in those last class. से क्लास मानकर आमे जहा पढिथिले ताको आमे वर्तमान प्रैक्टिस रो रूप देबा. प्रैक्टिस करियो. unless you practice, so the whatever the theory you read, it has no value. So it is better you are always advised to practice some of the important MCQs. आमे किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा आजी जहा पढिचे. ठीक अछि. जहा पढिचे लास्ट क्लास मानकर ताकू ही यूटिलाइज करिके. So our first question on GDP, gross domestic product. What is GDP? GDP कहले हमें कौन बुझुचे. What is GDP? Yes, quick please. जल्दी जल्दी आंसर करिवा. समस्त कहिबे. GDP कहले हमें कौन बुझुचे. What is the meaning of GDP? ये पूरा डिस्कशन करिवी. MCQ भी कहिवी प्लस तार कांसेप्ट भी कहिवी. यस ए. ताहले हमें कौन देखथिले. यार डेफिनेशन हमें कौन देखिथिले. जीडीपी रे कौन देखिथिले. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स. हां कि नहीं. कौन देखिथिले. ऑल फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड. नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज आल्सो इंक्लूडेड. इज दिस क्लियर. सो 1A मते बुझेबार नहीं. टोटल मार्केट वैल्यू. यस और नो. मते खाली गोटे क्वेश्चन एटी मोर. produced in the country. This is the geographical territory or economic territory. This is the geographical territory or economic territory. कौन पढ़िथिली मु.
डिस्कस होइतला क्लास रे डिस्कस होइतला इट इज द इकोनॉमिक टेरिटरी मन पड़िला दिस इज द इकोनॉमिक टेरिटरी नॉट द जियोग्राफिकल टेरिटरी very good next question on inflation what is inflation increase in price decrease in price increase in production decrease in demand so very basic questions just to recall what we have discussed in those last classes last class मानकरे जहा पढिचंती ताकू recall करिया पई yes very good Preet Sasmita Rohit yes so this is all about increase in price inflation अर्थ होची increase in general level of price मते खाली गोटे क्वेश्चन आंसर दे देले inflation को हमें केते भाग रे माने केमती केमती मेजर करूथिले inflation को केमती मेजर करा जाउथिला को इंडेक्स रे हमें inflation को मेजर करूथिले what are the index used to measure inflation next question को आसीबा तापरे what is meant by demand in economics yes दी भाग रे मेजर करा जाउथिला कोन कोन दीटा वे रे मेजर करथिला हम इन्फ्लेशन को सीपीआई एंड आ गोटे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवं की कहबे कृष्णा कल्पना willing and ability to pay तो अलग कथा कहू yes WPI प्रीत very good प्रीत okay now what is meant by demand in economics demand कहले हमें कोन बुझुची रोहित very good thank you very much correct answer CPI WPI प्रीति correct now demand in economics demand कहले कोन बुझुची हमें economics रे दीटा टर्म इंपोर्टेंट पढ़ाइतिली willingness and ability to pay for goods and services कोन कहली willingness and ability to pay for goods and services is this clear Lucy pranam how are you so after a long period of time again we all are together so economics class को हमें पुणी रिज्यूम करिचे concept session हमर सरी जाइतिला जेहेतु prelims आ अल्प दिन अछि हमें MCQ फॉर्मेट रे रिवीजन करियो no concepts only MCQ format रे हमें concept revision करियो next willingness and ability to pay for goods and services कला then what is fiscal policy कहले कोन बुझुची क्लास प्रति आज टू रिज्यूम होईची लास्ट किछि दिन तळे आउ इकोनॉमिक्स रो पूरा एंटायर सिलेबस मु कवर अप करथिले ए क्लास रे यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ओपीएससी वाला चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई परिबे समस्त एवं प्लेलिस्ट रे ही देखि परिबे सब पुराना क्लास अवेलेबल अछि रिकॉर्डेड फॉर्मेट ठीक अछि एवरीवन जॉइन पुराना स्टूडेंट हमर जो मान थिले समस्त जॉइन करि गले कल्पना जॉइन यस स्मृति very good so what is fiscal policy कहले कोन बुझे गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी central bank's monetary policies related to international trade policies related to inflation control yes join very good कल्पना कौन अब आंसर 4 नंबर समस्त आंसर दे सारी चंदी इट इज ऑल अबाउट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज दिस क्लियर चलिए नेक्स्ट which of the following is a direct tax बहुत simple question fundamental question which of the following is a direct tax simple and tricky question all others are indirect ना मत टिके मने पकई देबे कि डायरेक्ट टैक्स कहा को कहउतले what is the difference between direct tax and indirect tax incidence and impact जोटी पडुथला ताके कोन कहउतले हमें जदि सेम लोक ऊपर पड़े
ताको हमें कहूले कौन ना डायरेक्ट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स जदि अलग लोक ऊपर पड़ूला इंश्योरेंस और इंपैक्ट कौन देखुला हमें इंश्योरेंस इंपैक्ट हमें कौन देखुले यू जॉइन वेरी गुड डिफरेंट डिफरेंट लोक ऊपर हेले इनडायरेक्ट टैक्स ठीक अछि सो इनकम टैक्स टा डायरेक्ट टैक्स तो हमें दीटा जिनस देखते सहज भाषा कहूँ गोटे कहा पॉकेट रु जाउची फर्स्ट पॉइंट कहा पॉकेट रु जाउची प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू गवर्नमेंट और अथॉरिटी ये दीटा देखला हम इंश्योरेंस इंपैक्ट रे कहा पॉकेट रु एक्चुअली गला एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी कहार दिस क्लियर यू नोटिफिकेशन आसुनी नो प्रॉब्लम आज क्लास एबे कंटिन्यू क्लास अछि एबे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लास अछि व्हाट इज लिक्विडिटी इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज लिक्विडिटी इन इकोनॉमिक्स लिक्विडिटी कहले हमें कौन बुझे लिक्विडिटी ऊपर पढ़ीचे अगेन फंडामेंटल क्वेश्चंस इवन यूपीएस रे भी आजिकली फंडामेंटल क्वेश्चन आसुची आउ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बेसिक क्वेश्चन इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन आंसर if you have a good understanding then only you can answer what is liquidity in economics किए कहबे तो केते जल्दी गोटे एसेट को कैश रे हमें कन्वर्ट करि परछे दैट इज लिक्विडिटी या तो एसेट कन्वर्जन इनटू कैश एती कथा मु ताले एग्जांपल दोउछ एक नंबर गोल्ड दुई नंबर यू हैव हार्ड कैश तीन नंबर यू हैव अकाउंट बैलेंस यू कैन यूज फोन पे लेट्स से और जीपे फोन पे यूज करि परिबे ना सबुटु अधिक लिक्विडिटी कहार एटी कहले सबुटु अधिक लिक्विडिटी कहार ये तीनटा भितर सबुटु अधिक लिक्विडिटी आ गोटे दे 4 नंबर लैंड लेट्स से लैंड बा बिल्डिंग अछि आको बिक्री करी पैसा आने ये चारिटा एसेट अछि आपनको पाखरे आ भितर सबुटु अधिक लिक्विडिटी कहार रोहित गोल्ड प्रीति गोल्ड नो गोल्ड इज रॉन्ग आंसर गोल्ड इज रॉन्ग अधिक लिक्विडिटी कहार कैश इटसेल्फ तुम्हारे कैश ही अछि ना सो मोस्ट फास्ट प्रायोरिटी कहार कैश रो हां कि नहीं सेकंड प्रायोरिटी कहार न कैश हला फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी कहार कैश न सेकंड प्रायोरिटी कहार लिक्विडिटी सेकंड बेटर कहार कैश परे लैंड आउ कोन जल्दी बिक्री कर सबुटु अधिक इजीली आपन हाथ रे कोडी पैसा अछि एति देखियार अछि ना बस इजीली सबुटु अधिक बा सहज रे केमति पैसा आसीबो आपन हाथ रे कैश रे सेकंड कोथरे अकाउंट बैलेंस बा फोन पे देन 3 नंबर गोल्ड 4 नंबर आसीबो लैंड बुझिला वेरी गुड सस्मिता करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी रे कौन हुए दिस इज सेंट्रल बैंक्स रेगुलेशन हु इज अ सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया इंडिया पाई सेंट्रल बैंक के गवर्नमेंट्स बजेटरी पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी yes RBI is the central bank now what is the answer what is the correct answer here what is the correct answer yes MPC 6 members very good Preeti now A is the correct answer central banks regulation okay next
What is budget deficit? What is budget deficit? Budget deficit कहले कौन बुझुछ? Deficit term use हिची, so budget is all about revenue and expenditure. कौन कहली budget रे कौन अछि? Budget is all about revenue and expenditure. हाँ कि नहीं? Deficit माने कमी, budget रे कमी केते बेले? Now when expenditure exceeds revenue, when expenditure exceeds revenue, हाँ कि नहीं? ताले कौन हो आंसर? 8A. Good. Next. What is the supply curve? Supply curve कौन? What is supply curve? दीटा कर्व पढ़ी गोटे डिमांड कर्व और गोटे सप्लाई कर्व. सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस लेवल या तो सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस लेवल. नाउ फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन गला. बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? So this is all about record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world. Next is inflation targeting कौन? What is inflation targeting? What is inflation targeting? A central bank's policy to keep or to check inflation. Next, mixed economy रो अर्थ कौन? Mixed economy रो अर्थ अरे एक्जिस्टेंस ऑफ दी प्रकार रो सिस्टम हमको देखिबा को मिलुथिला. हां कि नहीं? इकोनॉमिक सिस्टम जदि हमें देखिबा हमें दी प्रकार रो इकोनॉमिक सिस्टम देखिबा को पाउथिले. कौन कौन? गोटे हला कैपिटलिस्ट मॉडल आ गोटे हला कोन सोशलिस्ट मॉडल. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल गोटे हला कैपिटलिस्ट आ गोटे सोशलिस्ट. आ भीतर प्राइवेट सेक्टर को की इंपोर्टेंस दउथिला एवं गवर्नमेंट सेक्टर को की इंपोर्टेंस दउथिला. गोटे गवर्नमेंट सेक्टर को इंपोर्टेंस दउथिला आ गोटे प्राइवेट सेक्टर को दउथिला. नहीं? So when both private and government they exist, both private and government they exist, that is known as mixed economy. बुझेला? So both private and government sector when they do exist, that is called mixed economy. Is this clear? But private and public sector both of these exist. ठीक है? Next 12 नंबर.
Indian economy is characterized by Indian economy is characterized by Indian economy is characterized by all of these. Predominance of agriculture, low per capita income, massive unemployment. All right, all of these. Who coined this term Hindu rate of growth for Indian economy? Yes, it was coined by Raj Krishna. Here it was coined by Raj Krishna. Next. GDP at factor cost. Question number 14. GDP at factor cost is केमती कैलकुलेट करथिले मने अछि ना मने पके दिबे आउतरे कैलकुलेट केमती होतला मने अछि ना नहीं कोन करथिले हम एठी देखो एठी लिखथिले जीडीपी जीडीपी रू करथिले हम कोन एनडीपी डेप्रिसिएशन माइनस होतला जीडीपी रू आ गोटे होतला जीएनपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होतला जीएनपी रू माइनस करथिले डेप्रिसिएशन हमको मिलुतला एनएनपी हैला एटी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करथिले मिलुतला एनडीपी रे एनएनपी मने पड़ला परे आसले मने पड़नी नहीं नहीं एटा पढैतिले आगु क्लास रे पढैतिले आजिर क्लास रे नुहे जे पूर्व क्लास करूथिले हमें सेतेबेले डिस्कशन कर हैला आ गोटे कहथिले फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमति होतला फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स रे खाली ऐड करथिले नेट इनडायरेक्ट टैक्स एटी ऐड करथिले फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस पाउथिले एती कथा तो से अनुसार आकु करबो आ निजे करबो ए क्वेश्चन आंसर now एटा मन रखंतु any type of question if you remember this cycle any type of question related to conversion in gdp easily you can do gdp related conversion easily करि परिबे जदि एटा खाली मन रखछन दैट्स ऑल आउ कुछ नहीं ठीक अछि नेक्स्ट per capita income is obtained by dividing national income by national income divided by
प्रीति फास्ट क्लास नो प्रॉब्लम फास्ट क्लास हेले भी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हैला बुझिया को चेष्टा कर बुझी पारियो दिस क्लियर which अच्छा एटा कोन हला एटा कोन कहला टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इजी क्वेश्चन नेक्स्ट which of the following is not method of measurement of national income एटा गोटे भलो क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मेथड किछि नाही नुहे कि rest of the methods are there rest of the methods are there next main source of national income in India is what is the main source of national income in India so tertiary sector now from service sector ही वर्तमान कथा पड़ी पूर्व एग्रीकल्चर थिला who estimated national income in India for first time पुलिस एसआई फॉर्म पकेच 10th रे कंपलसरी सब्जेक्ट एसआई फॉर्म रे कोन मु से फॉर्म ऊपर एते नॉलेज नहीं बेटर जेतळे एसआई ऊपर क्लास होतबो ना हमर एठी सेठी पचारिबे त कंसर्न एजुकेटर कैन रिप्लाई या ऊपर मोर पाखरे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं जो क्वेश्चन पचार एठी दीपक एसआई क्लास होची मैराथन सेठी पचारिबे आंसर मिल जिवो आपन तो ये कौन होइतला याको पढैतली मध्ये दादाभाई नारोजी ना दादाभाई नारोजी हैज रिटन अ बुक व्हाट इज नेम ऑफ दैट बुक दादाभाई नारोजी गोटे बुक भी लिखथिले तार ना कोन ही हैज रिटन अ बुक कोन बहिर ना ये कहि परिबे poverty and on poverty and on British rule in India he has also given this drain of wealth theory सेटा भी मन रखु drain of wealth theory मन रखिबे
मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ कोथुर जना पड़िबो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ कोथुर हम जानि परिबा भाई it is by per capita real income रा हम पकरे बेटर असेसमेंट करि परिबा इक्वालिटी इनइक्वालिटी फैक्टर तो हम चेक करि परिबा एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी existence of parallel or black economy फटाफट कोन ब्लैक इकोनॉमी कहा कोचे or parallel economy कहा को कोचे unaccounted money this is the unaccounted money in the economy what is this is unaccounted money in the economy ताले ये अनअकाउंटेड मनी हेले कोन हबो त माने गवर्नमेंट पाखरे जहार हिसाब नहीं गवर्नमेंट हैज नो एस्टिमेशन ऑन दिस ये कौन करू ना इट विल मेक the monetary policy is less effective. Now what is monetary policy all about? Monetary policy is all about liquidity in the market ना ये कौन करूची it is all about liquidity in the market. Liquidity means the amount of quantity of money in the market. Quantity of money in the market. बुझेला amount of money in the market. Now एई अनुसार monetary policy टा को हम हिसाब करथले monetary policy decide करथला what is the amount of money that needs to be there in the market. Now जदि हम पाखरे हिसाब ही नहीं मार्केट रे केते मनी अछि because of the parallel economy or black money ना दीटा पॉइंट एटी मन रखनु गोटेला black money is the untaxed money जहां पर टैक्स दिया जायनी आ गोटे हला इलीगल मनी द सोर्स इज इलीगल दीटा पॉइंट इंपोर्टेंट मन रखिबे आ गोटे ला कोन करी इलीगल मनी कोन इन इलीगल मनी द सोर्स इज इलीगल कौन कहते सोर्स इज इलीगल बुझिला मो कथा मे बी ड्रग्स ट्रैफिकिंग मे बी ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड ई सब क्लियर नाउ अनअकाउंटेड मनी ब्लैक मनी के मे बी द सोर्स इज लीगल लीगल सोर्स ही पारे बट कौन कहते लीगल सोर्स ही पारे बट
तार टैक्स दिया जाउनी मु कहली मु पढ़े कि 5 लाख टका मासको इनकम कले तार टैक्स देलेनी दैट इज ब्लैक मनी नॉट इलीगल मनी बिकॉज द सोर्स ऑफ इनकम इज लीगल टीचिंग इज लीगल जने ड्रग्स ट्रैफिकिंग रो 5 लाख इनकम कला दैट इज इलीगल मनी द सोर्स इज इलीगल क्लियर सो कोन हो आंसर एटी ताले it will make the monetary policies less effective it will make the monetary policies less effective बुझ पाले मो कथा next the philosophy of laissez-faire is associated with black money tax न देले illegal टा illegal source रो आसे illegal टा कोटू ना illegal source रो आसे now what is laissez-faire laissez-faire means non interference of state this is what this is non interference of state state will not interfere then who will interfere either state or market then who interferes then the market force रे सब चलियो market force रे सब चलियो so market force रे जोड़ा चलता कौन कहते that is called industrial state this is called industrial state now it is clear point number B 21 answer B ठीक अछि देखो बेसिक कांसेप्ट की नहीं क्लैरिटी आसुची कि नहीं मते कोन बेसिक कांसेप्ट पढुचे कि नहीं क्लैरिटी आसुची कि नहीं मते कोन आसुची very good body next in free economy inequalities in income is because of in free economy inequalities in income it is because of कल्पना हाँ काली भी क्लास हम कल्पना इनइक्वालिटीज कौन पाई देखिया को मिलुची हमको फ्री इकोनॉमी because of private property and inheritance रे कौन होची जनरेशन बाय जनरेशन सेम प्रॉपर्टी जाउची प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर करा जो सब गवर्नमेंट पाखरे सब नहीं गवर्नमेंट पाखरे सब प्रॉपर्टी नहीं हो कि नहीं government doesn't have all the property so there is private property and inheritance both exist so free economy but this is called market economy capitalist model or this is called market economy next personal disposable income means
स्टेटमेंट बेस्ड आनी स्टेटमेंट बेस्ड धीरे धीरे आनिबा सब आनिबा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आनिबी नेक्स्ट क्लास रो काली टू आज खाली कांसेप्ट रिवाइज आज बेसिक कांसेप्ट्स ऊपर अछि ना क्लास टॉपिक वाइज होची क्लास टॉपिक वाइज हम क्लास करछे सो आज अछि बेसिक कांसेप्ट्स ऊपर आज बेसिक कांसेप्ट सारे रिवाइज कर देबी सब तापर पुनी नेक्स्ट क्लास रे तो आनिबी मु टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सेठी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आनिबी disposable income रे कोन पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स नाउ डायरेक्ट टैक्स इट कोन disposable income is the income which can be save जहा को सेव करि परियो बा जहा को स्पेंडिंग करियो दीटर गोटे either you can save it or you can spend it so personal income minus direct tax this will give you disposable income clear either you can save it or you can spend it दीटर गोटे बुझिला now this direct tax it is a statutory deduction ये पेमेंट टा एटा दबा को पड़िबो ही पड़िबो it is a statutory deduction नहीं इटा नहीं सी हवनी पियो no tax is mandatory now next among Indian economists who want on pioneering work on national income who did pioneering work on national income किए वीके आरबी राव एटा समस्त कहि परबे नेशनल इनकम पढेला बेले मध्ये मु कहि क्लास next one of the problems in calculating national income in India is because of national income calculate करिवार प्रॉब्लम कोन non monetized consumption कहू जो माने what do you mean by non monetized consumption non monetized consumption means where there is no money used where there is no monetary transaction where there is no monetary transaction ठीक अछि where there is no monetary transaction why is demographic dividend likely to be how is it how is demographic dividend why nahi how is demographic dividend Abhijit you joined Abhijit बहुत old student बहुत दिन हला class करछो I remember your name so ये कहूची फ्यूचर रे कोन हबो इंडिया रो प्रियव्रत नमस्कार
पॉपुलेशन एज ग्रुप के 15 to 64 एज ग्रुप it is likely to be increased. So demographic dividend means 15 to 64. आज क्लास भी हम डिस्कशन करथले पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यू सोशल इश्यूज मेंस रो टॉपिक आज क्लास रे थिला बैच रे डिस्कस होतला सर्वशिक्षम 2 इन इंडियन सोसाइटी रे गोटे इंपोर्टेंट पार्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक्स रो भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट हैला नेक्स्ट अच्छा लाइक देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूसिव डेवलपमेंट refers to the social inclusion of socially excluded section of society. Second, creating productive and gainful employment opportunities. कौन हो C both. Inclusive development means social inclusion of excluded. Who are excluded then? Who माने socially excluded मते कोंदु? Women are socially excluded. Elderly, children. You can talk about SC, ST, OBC, third gender, LGBTQ community. No. So first option is correct. Second, creating productive and gainful employment opportunity also correct. ठीक है जी. Following statement related to GDP. Real GDP calculated by keeping inflation into consideration. Nominal GDP is calculated on the basis of prices of goods and services produced in current year. Which is correct? 1 or 2 with which is correct? रियल जीडीपी और नॉमिनल को हिसाब रे कैलकुलेट करछले रियल जीडीपी टा को अनुसार बेस ईयर रो प्राइस रे नउथिला हमें को अनुसार बेस ईयर प्राइस रे नॉमिनल जीडीपी टा करंट ईयर प्राइस को अनुसार नउथिले करंट ईयर प्राइस हैला सो ये को एटा को इन्फ्लेशन को आखि अगर रखी कि बेस ईयर प्राइस रे हमें कैलकुलेट करथले नल बेस ईयर कथा काहे करथला इन्फ्लेशन पाई तो उठला ना कि बेस ईयर रु आज पर्यंत केते प्राइस चेंज हेची फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट
nominal on the price of goods services produced in current year. Correct, both correct, हाँ कि नहीं? Then what is the answer? This one, what is the answer? Abhijit, you, এটা কোন সমস্ত? কল্পনা, সস্মিতা, ପିଲା ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୋର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୁ ଇଜି କରିବା। ନାଉ ଯୋଉ ଡର ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ସେତେବେଳର କ୍ଲାସ ରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୁ ଇଜି କରିବା ହେଉଛି ମୋର ବେସିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ओसीएस कैंडिडेट मानक भितर जो भय अच्छी कि इकोनॉमिक्स गोटे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक्चुअली इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नुहे, हाँ कि नहीं? आम अप्रोच रे कोट ना कोटी भूल रोच पढ़िबार इकोनॉमिक्स। जदि आम अप्रोच को ठीक कर दवा डेफिनेटली आम क्रैक करि परिबा एग्जाम। ना इकोनॉमिक्स पढ़ी के हमको इकोनॉमिक्स तो हबार ही नहीं, आरंभ रू कहि ओसीएस परीक्षा खाली क्वालिफाई करिवार अछि बस। एवरीवन अंडरस्टूड? बुझिले समस्ते? नेक्स्ट, ताले बोथ करेक्ट इट। हां, नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू, GDP deflector is used to, कौन पर यूज होची याको ऑलरेडी कहि सारची, इन्फ्लेशन को मेजर करिया पई ना। नेक्स्ट, डुअल इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ, कौन देखु छेटी डुअल इकोनॉमी रे? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन बोले? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न, डुअल माने दीटा जिंस रहइबो। सो एठी देयर इज प्राइमरी सेक्टर प्लस देयर इज सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर means your agriculture, secondary sector means your industry। एती कथा सरला कथा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स comprises of literacy rate, life expectancy, birth and आगरो जीडीपी रे मेजर होतला जीडीपी पर कैपिटा एट यूएस ट्रिपल पी यूएस डॉलर, एटा जीएनपी पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पैरिटी इन यूएस डॉलर्स ट्रिपल पी रे। कि ना लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, के पब्लिश करछ? दिस इज पब्लिश्ड बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय
किए पब्लिश कर published by UNDP, United Nations Development Program. Clear? Good. Last question. Activity rate of an economy depends on which factors? Now देखो केते statement based question अछि जोड़ा पचारथिला सस्मिता. School living age, popularity of higher education, social custom, retirement age. Activity rate माने केते दिन पर्यंत जने काम करूछ. Activity rate माने केते दिन पर्यंत जने काम करूछ. सिंपल जिनस अभिजित कहि दउछ तुम ठीक हो आंसर बुझे दउ छ. Activity rate कोन कहली जने केते दिन पर्यंत काम करूछ. ता कहछ activity rate. तो तुम जॉब कला परे जने 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष धर तुम हायर एज लिमिट बढ़ी बढ़ी जाउछ. आगु 32 ଥିଲା 42 हे गल. तो जो माने 42 रे जॉब को आसीबे से माने कोन करिवे. They will work for only 18 years. 18 वर्ष पे से माने मात्र काम करिवे. Now school living age जदि जल्दी जाउछ ताले बेसी दिन काम करिवो, लेट रे गले कम दिन काम करिवो. पॉपुलैरिटी ऑफ हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन जदि पॉपुलैरिटी अछि पीएचडी करि सारी जाउछ देन 30 प्लस. पीएचडी न करी जने चाकरी करियो के जाउछ देन 20 टू 21 जने चाकरी करि परिवो. Isn't it? सोशल कस्टम आपण कस्टम कोन अलाउ करूछ. रिटायरमेंट एज 60 अछि ना 62 ना 65. Retirement age will also define your activity rate. हाँ कि नहीं. रिटायरमेंट एज ताली चारिटा जाक एठी आंसर हबो कि नहीं मते कोन. पहिले आजिरो क्लास बुझी हला क्लियरली ना डाउट रहिला मते को. 33 टा क्वेश्चन कली बेसिक कांसेप्ट्स को पूरा रिवाइज करी. पूरा बेसिक कांसेप्ट्स को रिवाइज करी के कली क्लास. एनी डाउट. ठीक अछि. खुशी बुझी हला खुशी समझते ऑनलाइन बहुत बढ़िया. पीडीएफ को समस्त डाउनलोड करि परिवे क्लास परे. नेक्स्ट क्लास आसंता काली पुणी 9:10 टा. आसंता काली 9:10 एई सप्ताह रे आनिबे हैला. All right, that's all for this session. Thank you very much. Good night.